rather this question belongs to the section of colonialism. Yes. Now students, I have done to be smart. Very good. Excellent. C is the correct answer. Now you people are catching up. Question number 2. In context of Indian history, the principle of diarchy refers to a division of the central legislature into two houses. Even the previous question belongs to the UPSC paper. Even this question belongs to the UPSC paper. ये दोनों UPSC से ही है. Correct. Division of central legislature into two houses. Introduction of double government, central and the state government. Find out. Be fast. आप लोग इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वाले भी तो मीनिंग तो जान पढ़ने के बाद समझ पा रहे होंगे. Yes, D is the correct answer. You are correct. Question number 3. With reference to Indian freedom struggle, consider the following events. First, mutiny. Even this was a question in UPSC 2017 or 16. Mutiny in Royal Indian Navy. 2. Quit India movement launched. And third, mutiny. Actually, I have just whenever I thought the mutiny, I just believed in the mutiny of 1857. So I mistakenly have taken the choice at the mutiny of 1857. But you people, it is the naval mutiny. मतलब नौसैनिक विद्रोह था ये. And quit India movement आप जान रहे हो, भारत छोड़ो आंदोलन, second round conference भी आप जान रहे हो. ये मैंने भी पढ़ाया नहीं आपको. If you people can through intellectual guess, you can solve the question. You are most welcome. So please try. What is the correct chronological sequence of the events? C. Yes. Second National Conference 1931, Quit India Movement 1942, Naval 1946. So 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yes, you have done well. Well done. And then the question number 4. The Trade Disputes Act of 1920 provided for. Trade Disputes Act of. You have done well. Well done. And point C, an intervention by the British court in the event of trade dispute, and choice D, a system in the management of industries. यानी उद्योगों को चलाने में श्रमिकों का उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका. बी, आर्बिट्रेरी पावर टू मैनेजमेंट टू क्विल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. मतलब जो प्रबंधन है उसके हाथ में औद्योगिक विद्रोह दबाने, औद्योगिक हड़ताल दबाने की शक्ति. एंड इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब किसी भी व्यापारिक विवाद में ब्रिटिश न्यायालय की हस्तक्षेप. और डी, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स, मतलब एक न्यायाधिकरण का समूह कायम करना और हड़ताल पर पाबंदी लगाना. दैट आर द 4 इंपॉर्टेंट चॉइसेस. बी फास्ट. My friends, it is the better choice. B is the better choice. And a system of tribunals and a ban on strikes. इससे बढ़िया arbitrary power to the management to quell industrial disputes. Because tribunals दिया है, न्यायाधिकरण. भगत सिंह ने इसी के अगेंस्ट में बॉम्ब फेंका था असेंबली में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल. योजना कमिटी was formed in which of the following sessions? Be fast. कराची सेशन, बी लखनऊ सेशन, सी फैजपुर सेशन एंड डी हरिपुरा सेशन. Study we have done, we have just, you can say, taught you this part. Yes, Haripura session 1938. Subhash Chandra Bose. Why you people are selecting D? A system of tribunals and a ban on strikes. Tribunals का मतलब ये स्पेसिफिक न्यायाधिकरण अगर कोर्ट बनाए तो फिर होगा. ट्रिब्यूनल्स के कारण हमने इसको सिलेक्ट किया. अगर बैन ऑन स्ट्राइक होता है, I could have selected D. This is the basic problem, my friends. So due to this term, use of the term tribunals, I was at least you can say management was given the power to just quell the, you can say, strikes, industrial disputes. Just right one. Industrial dispute. Power to management of to quell the industrial disputes. No, you are right. Industrial disputes है. ये term objectionable है. ये D होना चाहिए. Right. All the tribunals have the objectionable point. They should not have used the term tribunals. कोई न्यायाधिकरण नहीं बना था. हुआ ये था उसमें जब 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल 2 लाया गया था. उसमें ये हुआ था कि इसको दबाने के लिए, जो अगर इस तरह के वर्कर्स स्ट्राइक्स होगा, उसको दबाने के लिए बलपूर्वक उसको बैन कर दिया जाएगा. कोई भी स्ट्राइक को बैन कर दिया जाएगा, किसी भी स्टेट को बैन कर दिया जाएगा. एंड दिस पावर वाज गिवन टू द पुलिस बेसिकली एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. But here they have used the term tribunals, but still you can say here disputes है, विवाद है. So विवाद is not the proper term and tribunals is, so I think you are right. So better to select this D. Now it is a better choice. So my friends, you have done well in all the 5 questions. That is congratulations, and you have definitely performed very well in MCQ. Now I'm a bit concerned about your long questions. What is your condition, my friends? Ajay, Ankur, just have you sent them the study material today? My friends, for your kind information, today the Indian national movement is starting from 1939 to 1947. There are 2 parts, 1939 to 1945, that is the one stage, and 45 to 47, the second one stage. So this combined together, both the, you can say about both the periods, study materials have been uploaded. So please, you people are requested to get them downloaded as early as possible, because now we have to start this topic 1. अब हमको ask my friends, अब इनसे पूछिए आप कि स्टडी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, I was given to some homework to do. So did my friends do it or not? Be fast, my friends, please inform me. Have you done it or not? Okay. But do you need any help from my side? Yes. Any help? Yes. Trade Dispute Act. Yeah. Trade Dispute Act and Public Safety Bill. They are the 2. Actually, they were enacted in 1929. What was the situation? I have to mention about the background. In fact, in 1920s, you know, the Marxist or communist movement became too much active, and there were some communist leaders who were much more active. For example, from South India, M. Singarvelu from Madras, Sripad Amrit Dange from Maharashtra, likewise you can say Muzaffar Ahmad from Bengal, and Nalini Sen Gupta, Shaukat Usmani, later even P.C. Joshi. So these were the communist leaders.
whether you prefer to call them communist leaders or Marxist leaders as you like. So these leaders were too much active and they were mobilizing the workers. And the workers' strike became frequent in 1920s. For example, in 1928, in 1929, the major strike in Calcutta Jute Mill, in Jamshedpur, etc. So the government became too much concerned. And you people may find one thing, it was in 1929, I have told you about Meerut conspiracy case. So Meerut conspiracy case started in 1929 and in a single sweep, at least 32 communist leaders were put into jail and they languished for 2.5 long years. So this was the trade dispute. You can say this was the Meerut conspiracy case. So at that time, the government became too much conscious about the communist activities. So they immediately brought two new bills, trade dispute bill and public safety bill. So according to the trade dispute bill, whenever any sort of, you can say, differences and any sorts of unrest appears, so it should be solved by a committee in which even the management had to participate and the workers. So that's why I have selected the B, because the trade dispute. But as the sole, you can say, power has been given to management in this question. So that's why later I have to switch over to your choice D. Because tribunals, there was not the provision of tribunals, but there was a provision in this management, this administration would make a watch on the workers, and whenever required, the management could put a check and put, you can say, a ban on the workers' strike. So that was correct. Public safety bill, if any sort of workers' strike was going to affect the public peace, then the administration could directly make an intervention into the matter. So these were the provisions. And against the provisions, because even the Congress leaders were not much conscious, and at that time, even other political parties could not show the proper resilience and power, and communist leaders were already in jail. So the HSRA, the members of HSRA, just took the gunlet and threw the gunlet against the government. And it was in this context that two important revolutionaries, Bhagat Singh and Bhagat shot the 3 bombs in assembly to activate the dumb and deaf. So in this way you can say this is the two bills. मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1929 में आपको याद है मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, उसमें बहुत सारे जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो एक्टिव थे, तो गवर्नमेंट उनको लेकर काफी चिंतित थी, तो उनको तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में 32 को बंद कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने 2 बिल लाया क्योंकि उसमें वर्कर्स का अनरेस्ट बहुत ज्यादा था, जमशेदपुर में हो रहा था, जूट मिल बंगाल में हो रहा था, तो उन्होंने 2 बिल लाए। उस बिल में प्रोविजन ये रखा कि अगर वर्कर्स स्ट्राइक होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को पावर रहेगा उसको बैन कर सकता है, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल में ये था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉल्व करेगी मैनेजमेंट और प्लस वर्कर्स के प्रयास से, मतलब वर्कर्स को फ्रीडम नहीं रहेगा। तो वही इसलिए मैंने बी के पहले डिस्प्यूट्स वाला टर्म जो आया था इसलिए मैं बी की तरफ चला गया था, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स टर्म यहाँ कंफ्यूजन था जो डी में था, ट्रिब्यूनल्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर चलो कई बार उसको लैक्स होकर डाल देते हैं। सो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन वाज क्रिएटेड देयर। तो लेकिन उसमें ये था कि दोनों को बैठना पड़ेगा, लेकिन निर्णय वही हुआ मैनेजमेंट तय करेगा और स्ट्राइक को बैन कर दिया गया, स्ट्राइक नहीं करना है, तो ये था। और पब्लिक सेफ्टी बिल में था कि अगर वर्कर्स की एक्टिविटी से पब्लिक पीस अफेक्ट हो रहा हो तो फिर जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टली वर्कर्स के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। तो यही दोनों बिल था, और इस बिल में चूंकि कांग्रेस नहीं खड़ी हुई उसके अगेंस्ट में और देश में कोई दूसरी पार्टी उतनी एक्टिव नहीं हुई और कम्युनिस्ट लीडर्स ऑलरेडी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में थे, तो इसलिए उनकी तरफ से HSRA के मेंबर भगत सिंह और बटुकेश्वर सरदत्त ने जाकर बॉम्ब फेंका था उसमें। तो दिस वाज द केस। 8th April 1929 the bomb was thrown into the assembly hall of Delhi. So अब Mr. Ankur, any problem now? कौन सा कहाँ रखा है क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन खोज रहा हूँ। Just 1 minute, my friends. I'm coming to the question. Throw light on the contribution of leftist ideas on Indian national movement. Why did leftism fail to assert its ceremony on national movement of India? My friends, if you could have been gone through the question slightly minutely, you can very well answer the question, because the same thing I have already dictated you yesterday. First part of the question is what? This question is hypothetical question. I'm not going to ask you whether hypothetical or argumentative, because you will have been smart enough to identify the question. You will definitely reply my question. It is hypothetical question. Like, why did the leftism fail to assert its ceremony on national movement of India? That is mark of interrogation. The second part is, even that is hypothetical, because not argumentative. Why did? क्यों ऐसा हुआ? So you have to give the cause. So direct causes you will mention about. And even the first part was hypothetical. So in the first part, I've already mentioned the fact. First of all, you have to give focus over the enlargement of the objective of the Indian National Congress. The enlargement of the objective of the Indian National Movement from political freedom to economic freedom. You have to mention about political freedom to economic freedom. The first of all. And then you have to mention about how did it influence the national movement, because the workers and peasants were just organized and it expanded the social basis of the national movement. And third one, it affected the policy of the Congress from Karachi session you will mention, Lucknow session, Faizpur session, and Haripura session. So even if you are going to mention about all those sessions, so and the provisions, slightly, simply will give a reference. So first part will be over. In the second part, you have to make the point, and you have to point out all the basic weakness of the different leftist or socialist groups, Communist Party of India, CSP, and overall the failure of communist movement. So that will be enough. But you people have possibly, I think, didn't take my question seriously, so I'm just doing it. जैसे इसमें क्वेश्चन का 2 पार्ट में हिंदी में बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, थ्रो लाइट ऑन। तो आप बताइए कि इस काल में कैसे फ्रीडम का जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ व्यापक हो गया, कैसे वर्कर्स पीजेंट्स को मोबिलाइज किया जाने लगा, कैसे कांग्रेस की पॉलिसी लेफ्टिज्म वामपंथ की तरफ मुड़ गई, समाजवाद की तरफ। कराची सेशन 1931, लखनऊ सेशन 1936, फैजपुर सेशन 1937, हरिपुरा सेशन 1938। तुम्हारे पास तो बहुत सारे मसाले हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में तुम दे दो क्यों फेल किया, तो कारण बता दो। 3 कॉलेज मैंने बताया, बस वही तो बताना था। आप लोग बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया, अंक किसी ने आंसर नहीं किया। इसको क्वेश्चन तो स्ट्रेट है। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे, आंसर किया कि नहीं? अरे आप लोगों का पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गया है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर मी। देखो आप आंसर में कर सकते हो। अच्छा, इंट्रो अंदर जाने। सो आई एम गिविंग द स्ट्रक्चर। अब टोटल कहोगे डिक्टेट करने के लिए दैट विल टाइम टेकिंग। ओके, तो हम इनको इंट्रोडक्शन लिख देता हूं और इनके कंक्लूजन के बारे में बता देता हूं। ओके, अब स्ट्रक्चर पूरा बना देता हूं। जैसे आप इसको क्वेश्चन क्या है, थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेफ्टिस्ट आइडिया इन 1920s and 1930s. That is the objective. The 1930s, the political and the economic front of the national movement, of the Indian national movement, in 1920s and 1930s, the political and the economic front of Indian national movement
movement came near to each other, came near to each other, and even objective of the movement was enlarged. It became possible due to growing influence of socialism or leftism. अभी ऑलरेडी स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब तुमने ये दिखा दिया कि 1920 और 1930 के दशक में, डेकेड्स में, जो नेशनल मूवमेंट का पॉलिटिकल फ्रंट है, इकोनॉमिक फ्रंट है, दोनों एक दूसरे के निकट है, उसका ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर गया, और ऐसा संभव हुआ समाजवाद या वामपंथ यानी लेफ्टिज्म और सोशलिज्म के प्रभाव में. यहां तक यू हैव जस्ट ऑलरेडी डन द वर्क. अब नाउ यू विल चेंज द पैराग्राफ. आफ्टर दैट हियर यू कैन सी आई एम जस्ट, देन विल चेंज द पैराग्राफ एंड देन विल मेक दिस पॉइंट क्लियर कि लेफ्ट सोशलिज्म, आई एम जस्ट दिस क्लियर कि लेफ्ट सोशलिज्म एंड लेफ्टिज्म transformed the national movement in following way. Is this quite clear? Now make the short points. At the one point you mentioned about objective. The objective was enlarged, and now apart from political freedom there was craving and there was initiative, or there was, you can say, craving or passion for the economic freedom as well. At the second one point मतलब तुम दिखा दो कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बन गया. आप ऑलरेडी जानते हो. उसके बाद फिर दूसरी craving दिखा दो पॉइंट नंबर 2 में कि now the workers and peasants were being mobilized on massive scale by different party, particularly the socialist and the leftist party. मतलब बड़े पैमाने workers and peasants were being mobilized on, दूसरी craving दिखा दो पॉइंट नंबर 2 में कि now the workers and peasants were being mobilized on massive scale by different party, particularly the socialist and the leftist. There was craving and there was initiative, or there was, you can say, in following way. Is this quite clear? Now make the short points. At the one point you mentioned about objective. The objective was enlarged, and now apart from political freedom there was craving and there was initiative, or there was, you can say, craving or passion for the economic freedom as well. At the second one point मतलब तुम दिखा दो कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बन गया. आप ऑलरेडी जानते हो. उसके बाद फिर दूसरी craving दिखा दो पॉइंट नंबर 2 में कि now the workers and peasants were being mobilized on massive scale by different party, particularly the socialist and the leftist party. मतलब बड़े पैमाने पर अब किसानों और श्रमिकों को संगठित किया जाने लगा समाजवादी और वामपंथी दलों के द्वारा. तीसरा दे दो कि now even the policy and programs of the Congress were widely influenced by the socialist or leftist program. And then you have to mention in Karachi session, even in the study material, in Karachi session 20-point socialist program was introduced. Likewise in Lucknow session and Saidpur session progressive agrarian programs were, you can say, adopted. जो प्रगतिशील सोशलिस्ट कार्यक्रम है उसको अपनाया गया. और then in Haripura session at the initiative of Subhash Chandra Bose as a president, there was the formation of Yojana committee. So in this week gradually, even if you can mention, तो you can mention even in 1937 the elections, the Congress adopted the socialist manifesto. मतलब कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 1937 में सोशलिस्ट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया. ऐसा भी आप देख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर. ये तीनों हो गया, तो पहला पार्ट आपका पूरा हुआ. अब देखो, अब इसके बाद फिर आप यू हैव टू चेंज योर पैराग्राफ. एंड बट in spite of initial influence, leftism or socialism failed to assert its hegemony on national movement. देखो, हेजेमोनी का मतलब होता है, जो हेजेमोनी है उसका मतलब होता है वर्चस्व. हिंदी में कहते हैं उसको वर्चस्व, मतलब अपना प्रभाव. एक तरह से वर्चस्व का, तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ सिनोनिम, इंपैक्ट इज नॉट अ सिनोनिम फॉर हेजेमोनी, बट एटलीस्ट यू कैन से डिस्टिंक्ट मीनिंग इज इंपैक्ट और प्रभाव. मतलब फिर भी ये प्रभाव स्थापित करने में विफल रहा. बट इन स्पाइट ऑफ इट वाज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स. अब यहाँ पर फिर अब 3 पॉइंट दे दो. मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. अब ये 3 पॉइंट क्या होगा, तो पहला पॉइंट आप यहाँ डॉट दे दो, और डॉट देके दो कि द Communist Party of India, unlike the Communist Party of China, the Communist Party of India could not chalk out its strategy according to their specific Indian condition. And unlike the Communist Party of China, the Communist Party of India failed to chalk out its strategy according to the specific Indian condition. मतलब जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनी रणनीति तय नहीं की. पॉइंट नंबर 2 इसमें दोगे कि even the Congress leftist party was divided in its objective. It diluted its socialist objective for the sake of nationalist cause. मैंने आपको कल बताया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारे नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव और सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव में अगर कोई डाइवर्जेंस होता है, कोई डिफरेंस होता है, तो हम अपनी प्रायोरिटी अपने नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव को देंगे, ना कि सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव को. तो उसने भी एक तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को डाइल्यूट कर दिया. तो ये तो हुआ. एंड थर्ड पॉइंट होगी, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सीजेंसी और टाइम ऑफ क्राइसिस द डिफरेंट सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट पार्टी कुड नॉट फॉर्म द जॉइंट फ्रंट. हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा. अब कंक्लूजन में दे दो कि दैट्स व्हाई इन स्पाइट ऑफ इट्स इनिशियल सक्सेस द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कुड नॉट ट्रांसफॉर्म द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इन टोटलिटी, और नॉट ट्रांसफॉर्म द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया according to its objective or according to its plan. कुछ भी ऐसा देके आप कंक्लूजन दे दो. अब मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, आर दे क्लियर? प्लीज गिव मी सम हिंट माय स्टूडेंट्स. आर यू क्लियर? प्लीज बी फास्ट. आर यू क्लियर?
Yes, sir. So बस just take my advice and always keep with my phrase, keep on with my phrase, keep bugging in the Churchillian phrase on daily basis. Whatever difficult you find, I will suggest you, even if you are not in a position to write 150 words, at least try to write 100 words, 75 words, 80 words. But you people, take the oath on every day. You will take the pen in your hand and try one question at least. अब देखो, you will create, you can see some miraculous impact on your whole preparation. You will be surprised to know that after 1 and 2 months, you will be a very expert writer, and you are just writing the question in a very, you can say, efficient manner. Today you are performing much well in MCQ questions. You are smart enough, so you will do in the same in the mains question as well. आप लोग को मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक मेरा सजेशन है कि डेली बेसिस पर 75 वर्ड्स क्यों ना हो, 100 वर्ड्स क्यों ना हो, आप लिखते रहिए. 150 वर्ड्स ना हो, छोटा ही हो चलेगा, थोड़ा बड़ा हो वो भी चलेगा, लेकिन राइटिंग बंद नहीं होनी चाहिए. ये बात को ध्यान रखिएगा. So now I am just coming to my once again the same diagram. How much of India? I see. See, needs reply in Hindi or English. I see your question is कि how did the strengthening of rupee in relation to pound sterling was going to encourage the import within India in place of and discouraging the export from India. मतलब आपका प्रश्न यह है कि अगर भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड की तुलना में मजबूत बना दिया जाता है, क्योंकि मैंने एक बात तो आपको बताई है कि हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से जो which came to India in 1920, which recommended in 1926 Hilton Young Commission, at its recommendation consciously the rupee was strengthened in relation to British pound. So it affected the Indian, it encouraged import within India and discouraged export from India. Here I am giving the example. Take for example, if 1 pound was equivalent to 10 rupees, okay? So suppose you are an exporter and you have exported, sorry, earlier I'm changing. Suppose you can say कि earlier 1 pound was equivalent to 50 rupees. So suppose you are an exporter and you have exported 1 lakh, exported the goods costing 1 lakh pound. So you will get 15 lakhs rupees in return, because you will get money after conversion from pound to rupee. You will get 15 lakh rupees. And for example, you can say कि you were an, suppose you can say कि you may be an importer. So earlier you imported something in your country from somewhere costing 1 lakh pound. So you were liable to pay 50 lakhs rupees in return. But now after strengthening of rupees, suppose if now the relationship between pound and rupee changed and 1 pound was equivalent to 10 rupees. So suppose you are an exporter. So now you will export some goods costing 1 lakh pound. You will get simply 10 lakh rupees. And one importer has to liable to pay the 1 lakh pound money in through 10 lakhs rupees. तो 10 लाख रुपए ही. तो इन दिस वे हियर द इंपोर्टर इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड एंड एक्सपोर्टर वाज एडवर्सली अफेक्टेड. मैं फिर हिंदी में बता देता हूं. देखो, जैसे आप अगर जो हिल्टन यंग आयोग है उसने रुपया को पाउंड्स के तुलना में मजबूत बना दिया, एक समझो तो जानबूझ के ऐसा किया. तो अब क्या हुआ कि जैसे आप मान लो एक्सपोर्टर हो और अभी रुपया को पहले रुपीस का कॉस्ट ऐसे था कि 1 पाउंड 15 रुपीस के बराबर था. तो तुम अगर एक निर्यातक हो और तुमने 1 लाख पाउंड का निर्यात किया है तो पहले तुमको 15 लाख रुपीस मिलता था. ओके, अब उसको जब मजबूत बना देगा, स्ट्रेंथन कर देगा, तो 1 पाउंड 10 रुपीस के बराबर हो जाएगा. तो अब तुम अगर 1 लाख पाउंड का अगर तुम निर्यात करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तुमको 10 लाख पाउंड ही मिलेगा. और एक इंपोर्टर ने पहले अगर 1 लाख पाउंड का गुड्स का वो इंपोर्ट करता था इंडिया में, तो उसको पहले 15 लाख रुपीस 15 लाख देना पड़ता था. अब उसको 10 लाख ही देना पड़ेगा. तो मेरे विचार से समझ में आ गया होगा कि इसमें इंपोर्टर को घाटा होता है, डेफिसिट होती है, और एक्सपोर्टर को सॉरी उल्टा हो गया, एक्सपोर्टर को घाटा होता है, इंपोर्टर को फायदा होता है अगर रुपया स्ट्रांग हो गया तो. दिस इज द केस. मिस्टर अंको, आर यू क्लियर नाउ? Now I have to move further. Just observe here. In peasant unrest, nothing unusual. In peasant unrest, you can say, because we have just discussed about the Indian national movement in 19. This is the diagram in 1929 to 39. So during this period, you find one important development was earlier in 1920s. There was the formation of provincial, you can say the Peasants Provincial Assembly, and you can say the Peasants Provincial Organization. For example, UP Kisan Sabha, Bihar Kisan Sabha. So such organizations were being formed in 1920s. But in 1936, you will come to realize that there was the formation of an all India Peasant Organization. All India Peasant Organization was formed in 1936 under a leader Sahajanand Saraswati. You will find my study material in my PDF. Sahajanand Saraswati. And here I informed that it was the time that some socialist leaders under the leadership of Karyanand Sharma, some socialist activists under the leadership of Karyanand Sharma moved to Barhia in Bihar. You can say Barhia Tal. And Barhia Tal, they organized the Peasant movement in 1937-38 under Karyanand Sharma. So on Peasant movement, simply such information in 1930s. Because whenever to find out the information, you will just continue the information directly from 1920 to 1936. मतलब हमने जानबूझ के आपको थोड़ा सा किसान आंदोलन, थोड़ा सा श्रमिक मजदूर आंदोलन के बारे में दे दिया. प्रीलिम्स में काफी नहीं है, मेंस में काफी है, क्योंकि आपको एक दो एग्जांपल से ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा. तो दैट इज एसेंशियल फॉर यू. यहाँ पर आप देखते हो कि 1936 में पहले तो मैं 1920 के दशक में मैंने कहा था कि प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ. अब ऑल इंडिया किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है. और देयर वाज द प्रोविंशियल किसान सभा, ना ऑल इंडिया किसान सभा. उसके बाद बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं, वो बढ़िया टाल बिहार में गए मूवमेंट चलाने. टाल एक लैंड होता है, जब आप पढ़ते हो गया पढ़ोगे, तो टाल एक टाइप का लैंड होता है, बढ़िया में था. वहां पर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया और उस 37-38 में चलाया. तो इसमें इतना है. वुमेन्स कॉन्शियसनेस वाइज डॉक्टर सरोजिनी नायडू, हैव टू मेंशन सरोजिनी नायडू एंड मिसेज एनी बेसिंग, बोथ आर एक्टिव एंड बोथ वर फाइटिंग फॉर women's suffrage, So they were fighting for women's suffrage, and due to their consistent efforts, finally, because in 1920 you were already informed of the fact that in provincial elections, in the elections of the provincial assemblies, the women got the right to franchise. Women got the right to franchise in 1921 itself, sanctioned by Montagu Chelmsford Reforms Bill 1921, and in Bengal and in Madras and Bombay, etc., up to 1930. So women got the right to franchise in provinces between 1921 to 1930. But for the first time in 1935, on the basis of Indian Council Bill of 1935, you can say Indian Council Bill of 1935, women got the right to franchise in central legislature, you can say. मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही कि देखो, अब वुमेन्स का नाम होते, एक तो मैंने मिस कजिन के बारे में बताया, श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में बताया, एक डॉक्टर सरोजिनी नायडू के बारे में बताया. ये सब एक्टिव है शुरू से ही. और पहले 1920 में इनके प्रयास से बहुत सारी चीजें हुई. ऑल इंडिया
श्रीमती एनी बेसेंट और मिस कजिन के प्रयास से ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा इन लोगों ने वीमेंस इंटरनेशनल इंडियन वीमेन एक कॉन्फ्रेंस करके बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और मैंने बताया था कि डॉक्टर सरोजिनी नायडू यहाँ से मोंटेगू चेम्सफोर्ड के बिल वार्ता करने यहाँ से लंदन तक चली गई, वीमेंस के फ्रेंचाइज उनके मताधिकार की बात की, तो 1921 से 30 तक प्रोविंसेस में मताधिकार मिल गया, वोटिंग राइट मिल गया। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेचर मिला है उसको हमने जानबूझ के इधर रख दिया 1930 में। अगर क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो 1920 और 30 मिला के पूछेंगे, तो यू कैन वेरी वेल डू दैट। तो 1935 में उनको सेंट्रल जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल, उसमें भी वोटिंग करने का राइट मिल गया। यही है, इसके ज्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल बिल 1935, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस एंड कांग्रेस रूल इन 28 months. So my friends, already in my study material I have just mentioned about all these things. Just 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. This one. यहाँ आपको 1935 का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, here I am making clear. You find out the two different names. One name is Indian Council Bill of 1935. Another name is Indian Government Act of 1935. Both are the same. Here I am just writing Indian Council Bill of 1935. Okay. Now, my friends, earlier you have already observed the Indian Council Bill of 1919. But now this act was just this act came into existence and the act was adopted. Indian Council Bill. This bill was formulated. How many years after that, you can say? So nearly 16 years after that. In the meantime, the national movement progressed a lot, and even the Congress politics became much more radical during this period. Because during this period, the Congress could manifest the two mass movements: one, the non-cooperation movement; another is the civil disobedience movement of 1930. During this period, the Congress already formulated a constitution in 1928 Nehru Report, which might have influenced the procedure of 1930 Bill of Indian Council Bill of 1935. And then Simon Commission boycott movement, Nehru Report, you can say. So non-cooperation movement, Nehru Report. Simon Commission boycott, Nehru Report, and finally civil disobedience movement. So it was going to definitely, you can say, the expectation of national movement became so high, and particularly the expectation of the Congress, Indian National Congress, became so high. So the government had to give a number of concessions. So definitely, you can say the Indian Council Bill of 1935 was a major advance over the Council Bill of 1919, but still it was much below the nationalist expectation. मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब 1919 उन्होंने बिल दिया था, उससे 16 वर्ष बीत चुके थे, तब तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी। दो नेशनल मूवमेंट का एडवांसमेंट काफी हो चुका था। कांग्रेस ने दो मास मूवमेंट, 2 जन आंदोलन का लीड किया था। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन और सहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन 1930 का। 1928 में आप देखते हो कि साइमन कमीशन बाइकआउट हो चुका था। 1928 में पहली बार इंडियन पार्टीज मिलकर अपना इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी थी। तो इन सबका प्रभाव तो 1935 के एक्ट पर पड़ना था। लेकिन मैं फ्रेंड्स, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट कि देखो अब है क्या कि अगर आप 1919 के बिल से तुलना करोगे तो 1935 का काउंसिल बिल आपको काफी एडवांस दिखेगा। लेकिन अगर आप उस समय जो राष्ट्रवादी आकांक्षा थी, नेशनलिस्ट एक्सपेक्टेशन था, उसकी कसौटी पर इसको देखोगे तो बहुत कम ठहरता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं। तो पहले आता है वायसराय। ओके, वायसराय की काउंसिल है ऑलरेडी, और आप देखते हो यहां पर सेंट्रल लेजिस्लेचर है। सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ओके, सेंट्रल लेजिस्लेचर है। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 सदन है, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, upper chamber and lower chamber. But my friends, at central level there was no provision for any sort of responsible government. No provision for responsible government. Mr. Ankur asked my friends, please, because Ankur is just like you can say Sanjay of this draft, so you people have to respond quickly so that my class is not going to be delayed, because here I just try to make this class communicative with you people, and it is possible after your fast response. So my question is, are you people very clearly, are you people having the knowledge about the term responsible government? क्या आप लोग उत्तरदायी सरकार या रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की मीनिंग जानते हैं? आप लोग क्विक रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि मैं इस क्लास को चाहता हूं कम्युनिकेटिव बनाना, कि हमारे आपके बीच संवाद स्थापित रहे। एंड अंकुर इज ए ब्रिज, और संजय व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल हिम, सो प्लीज इन्फॉर्म मी। रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, Yes, sir. yes, okay. Now that government which is accountable to the assembly. But my friend, in center neither viceroy nor his council were accountable to the assembly or responsible to the central legislature. If it could have been responsible, it means if it was going to lose the confidence of central legislature, then this the government would, or the council or the viceroy was liable to or compelled to resign from the post. Then this is responsible government. Responsible government का मतलब होता है एक ऐसी सरकार हो जो निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी, और जिस दिन निर्वाचित विधानमंडल का विश्वास खो देता है, उस पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी सरकार को हम रिस्पांसिबल कहते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई मान के चलते हैं कि काउंसिल है, इसी को हम मिनिस्ट्री मान लेते हैं, तो काउंसिल वायसराय के प्रति रिस्पांसिबल है, वह इन दोनों में से किसी चैंबर के प्रति रिस्पांसिबल नहीं है। And here I have to inform you, simply you can say, and whatever law were accepted by the parliament, the central legislature, so that needs due permission from viceroy, and viceroy was enjoying too many discretionary powers. मतलब कि viceroy ऑल पावरफुल है, उसके पास बहुत सारे विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और जो नीचे का उनका जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, कोई अगर बिल को एक्सेप्ट करती है या एक्सेप्ट करती है और उसको पास करती है, तो उसको वायसराय का भी अप्रूवल चाहिए होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में तो देखो कोई दाल नहीं गलना है, वो तो वहां पर इंडियंस का ज्यादा से ज्यादा है कि वायसराय के काउंसिल में कुछ इंडियंस को रखा गया था, मैक्सिमम कंसेशंस वर गिवन टू इंडियंस, एंड डिस्क्रिशनरी पावर जो वायसराय का है वो है। सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स ज्यादा है, परंतु इतने सारे रिजर्वेशंस हैं कि कांग्रेस की मेजॉरिटी फिर भी नहीं बनी है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, इसने जो प्रोविजन लाया था वो था फेडरेशन का। एट द लेवल ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर देयर वाज अ प्रोविजन फॉर फेडरेशन, एंड दिस फेडरेशन हैड टू बी फॉर्म्ड ब्रिटिश इंडिया,
British India plus princely states. Princely states. There was a provision for a federal government at the center, and this federation had to be formed comprising the regions of British India and the princely states. अब British India और princely states दोनों को मिलाकर फेडरेशन बनना था. प्रोविजन यह था कि अपर और लोअर दोनों चैम्बर में नियरली 60 to 70% मेंबर्स विल कम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 30 to 40% मेंबर्स हैड टू कम फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स. मतलब पहले ही हुआ था कि एक फेडरेशन बनेगा, एक संघ बनेगा, और ब्रिटिश इंडिया से लगभग 60 से 70% मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और लगभग 30% to 40% मेंबर्स ये प्रिंसली स्टेट से आएंगे. एक और भी इसमें दिलचस्प चीज है कि फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया द मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड either from different interest group or from the different regions, but after all elected. But in princely states the members would be nominated. अब देखो कितना अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो किया गया. अब 30 से 40% मेंबर्स ये नॉमिनेट होकर आएंगे. उसको मनोनीत करेगा कौन? तो प्रिंसेस, जो राजा है, किंग है प्रिंसली स्टेट्स के. तो बताइए वो क्या डेमोक्रेसी, मतलब कंप्लीट अनडेमोक्रेटिक है. अभी 30-40% आएंगे तो ब्रिटिश को लगता है चलो दे विल वर्क एज ए बुलवर्क अगेंस्ट एनी रेडिकल चेंज विद इन असेंबली एंड दे विल जस्ट दे विल वर्क एज द कन्जर्वेटिव एलिमेंट, सो दे विल जस्ट ट्राई टू यू कैन से foil some of the radical programs of the Indian National Congress, and Congress was going to be a radical organization at that time. It is talking in terms of the socialist program etc. तो ब्रिटिश को लगा था अच्छा ही है जब नॉमिनेटेड मेंबर्स किंग के आएंगे तो वो लोग तो बड़े कन्जर्वेटिव होंगे, कोई एक रेडिकल प्रोग्राम को पास ही नहीं होने देंगे. बट माय फ्रेंड्स, फॉर the formation of this federation there was some condition and this condition had to be fulfilled. This federation needed approval from at least 50% of Indian states. यानी इस तरह का फेडरेशन तभी बन सकता था जब इसमें कम से कम 50% इंडियन स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, यानी प्रिंसली स्टेट्स का. एंड प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट enthusiastic for this federation, so they withheld their approval, so this federation could never come into existence. It was a total failure. तो फेडरेशन वाले क्लॉज को तो आप भूल जाइए. इसमें कंडीशन था कि 50% इसमें जो राज्य है उसकी स्वीकृति चाहिए और राजाओं को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, तो ये अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है. तो आप समझ गए होंगे. अब आते हैं प्रोविंसेस में. प्रोविंस, तो प्रोविंस में आपको यू विल फाइंड द मेजर एडवांसमेंट. मेजर एडवांस व्हाट इज दैट? दैट इज गवर्नर, एंड इन गवर्नर यू कैन से इलेक्टेड मिनिस्टर्स, and elected ministers के, and that is legislative assembly. Just I am moving here, you have to observe. Up here you people have to understand this thing. That is province. In province there is governor, and here the elected ministers and legislative assembly. So my friends, what important thing you find here? Here you find the responsible government. अब पहले से एक बहुत बड़ा फर्क आया. फर्क क्या आया? जस्ट इलेक्टेड मिनिस्टर्स. फर्क आया इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. देखिए ये रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कैसे है? हाउ वाज यू कैन से इन व्हाट वे इट वाज रिस्पांसिबल गवर्नमेंट? यू जस्ट कम टू रियलाइज कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस. इट हैपेंस दैट हियर सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज यू कैन कॉल द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर द प्रोविंस. अब अर्लियर यू कैन से यू हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड डायरेक्टली. डायरेक्टली मींस कि नाउ इन स्टेट लिस्ट यू कैन से अर्लियर द स्टेट लिस्ट यू फाइंड दिस स्टेट लिस्ट बिकॉज़ यू पीपल हैव बीन स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टली स्टेट लिस्ट यू कैन से द सब्जेक्ट्स वर जस्ट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स अर्लियर. The name of the subjects you find that is reserved subjects and transferred subjects, and the governors could at that time the governors gave the right on reserved subjects only to the nominated ministers, and the elected ministers were simply enjoying the right on the transferred subjects which consisted of the four major subjects, agriculture, education, health and local self-government. So very limited power was being enjoyed by you can say elected government simply on transfer subjects. But now my friends, in 1935 there was provincial autonomy, because for the first time it was decided that province will be under the control of elected government. So now all the subjects, no division between transferred and reserved subjects. On all the subjects, simply the elected ministers were having the control. There was no nominated ministers, and governors had to work according to the advice of the elected ministers. मतलब अब समझ गए दोनों का फर्क. जैसे पहले क्या था, आपने डायरेक्टली में 10 शासन में देखा था, दो तरह के विषय कर दिए गए थे, एक हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय. और डायरेक्टली के तहत जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स है उनको केवल हस्तांतरित विषय पर ही राइट दिया गया था, ट्रांसफर पर ही. चार ही थे, जिसमें आपने देखा कृषि थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वास्थ्य, लोकल गवर्नमेंट. लेकिन अब क्या है कि इसमें चेंज कर दिया. इसमें कहा गया अब जितनी भी पावर्स हैं दैट द पावर्स वुड बी इन्वाइड सिंपली बाय इलेक्टेड मिनिस्टर्स, मतलब नो नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स. मतलब सारा पावर अब आ गया इलेक्टेड मिनिस्टर्स के पास. बट देयर वाज सम रिजर्वेशन यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट. गवर्नर्स हैड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स. फॉर एग्जांपल, in interest of the British economic interest, the British trade interest, for the protection of Europeans as well as the British, on different issues the governors were enjoying the discretionary powers, which was beyond the domain of the elected government. First thing, and the worst of all, there was a provision of in the Indian Council Bill, there was a Indian Council of 1935, there was the provision of Article 93. In Article 93 there was a very contentious issue and there was very disturbing provision कि governor could any time dismiss the state government and elected government and could take power into his hand directly. It is just like you can say precursor of the existing Article 356 in our constitution, what in was the president rule. मतलब कि इसमें गवर्नर को राइट दिया गया था, गवर्नर किसी समय जो निर्वाचित मिनिस्ट्री है उसको गवर्नर डिसमिस करके और पूरा पावर गवर्नर अपने हाथों में ले सकता है. और ये जो आप जो आर्टिकल 356 देखते हो हमारे संविधान में है, जिसमें आपातकाल का प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन, उसका ये प्रीकर्सर मतलब इसका पूर्वगामी था ये एक्ट. तो बेसिकली कांग्रेस वाज हैविंग द ऑब्जेक्शन टू द आर्टिकल 93. अपार्ट फ्रॉम दैट यू पीपल हैव टू ऑब्जर्व कि सम मोर प्रोविजंस वर देयर. उसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस इसमें था. एक extension in franchise. Franchise means Indian Council Bill only 65 lakh people were enjoying the right to franchise. मतलब सिर्फ 65 लाख लोगों को पहले मताधिकार था 1919 में. अब उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया. 3 करोड़ वोटर्स. अब टोटल वोटर्स का नंबर इंडिया में 3 करोड़ हो गया. बट स्टिल it could not fulfill the demand of universal adult franchise, which was the earlier demand of Nehru report. You find one man one vote, universal adult franchise, it was denied. Still simply 10 to 11% people were having the voting right or the right to franchise. So 3 crore people were enjoying the voting right, 10% to 11% people. Furthermore, earlier the Burma was the part of Indian Union, but Burma was separated from India in this act.
Then in this act there was a provision for Reserve Bank of India, which existed later. There was a provision of a federal court, संघीय न्यायालय. So Reserve Bank of India came into existence in 1935 and federal court in 1937 according to the recommendation. Finally, you can say one interesting thing. Earlier the head of finance was Secretary of State. So finance was, you can say, vested in the office of Secretary of State, which was in London. But in this act it was transferred to India and now it was vested into the Council of Viceroy. So the British were just making the boastful claim. Now we have transferred the, you can say, the supreme financial issue from London to India. So that is commendable. But here we are having a point of objection. What difference it makes for us? Earlier it was being enjoyed by the Secretary of State, now the Viceroy of India. Indians are not having any control over the finance. So after all, you are the head of the finance, whether it is existing in London or in India. So why are you making a boastful claim for giving us a major concession? तो मतलब ये है कि इसमें मैं प्रावधान बता दूं. एक तो प्रावधान यह था कि जैसे बर्मा पहले भारतीय यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था, तो बर्मा को सेपरेट किया गया था इसी एक्ट में. और इसके अलावा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान था जिसमें 1935 में बना भी, और एक संघीय न्यायालय का प्रावधान था फेडरल कोर्ट जो 1937 में बन गया. और इसके अलावा ब्रिटिश एक बड़ा ही गर्व के साथ कहते हैं कि हमने भारत का जो वित्त का प्रधान है वो हम वित्तीय मुख्यालय हम लंदन से इंडिया ले आए. मतलब पहले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास था, वो आ गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास. तो इंडियंस ने क्लेम किया कि भाई इसमें आपने कौन सी बड़ी बाजी मार ली, कौन सा तीर मार लिया, अरे पहले भी ब्रिटिश के पास था, आज भी ब्रिटिश के पास, इससे हमें क्या फायदा मिला ये बताइए. तो खैर एनीवे, पॉइंट इज ये प्रावधान था और यही था इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1935. अब व्हाट हैपेंस लेटर? सो वी पीपल हैव टू मूव नाउ. अब देखिए, अब यू हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस. And the second one, differences within the Congress on future course of action. Rightist and leftist faction. अब देखिए, अब कांग्रेस convened a meeting at Lucknow in 1936 in order to view over. The Congress convened a meeting at Lucknow in 1936 in order to view over this Indian Council Bill of 1935. Then Jawaharlal Nehru reacted. He told, or he just, you can say, coined a phrase, this act is having all brakes with no engine. Means that the British British here placed so many checks over the act, but the British didn't give power to Indians. In 1936 in order to view over this Indian Council Bill of 1935. Then Jawaharlal Nehru reacted. He told, or he just, you can say, coined a phrase, this act is having all brakes with no engine. Means that the British British here placed so many checks over the act, but the British didn't give power to Indians. It was having all brakes with no engine. But still the Congress accepted the act and Congress decided to fight the elections. But at that time, as well, the Congress was divided into two different factions, the rightist faction and the leftist faction. The rightist faction was being led by Chakravarti Rajagopalachari, Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Chakravarti Rajagopalachari. So this faction was quite now, you can say, disturbed at the phenomena that Congress has fallen into a state of inaction. So according to it, now, as the Congress after withdrawing civil disobedience movement is not active and remain to be, you can say, inactive. So now this situation is going to demoralize the people of India. So Congress had to open now, because Congress has not to launch any movement presently. So Congress had to open now the, you can say, door of constitutionalism. It had to fight the elections and form the government to show the popular strength to the government. So it was the view of the rightist faction of Chakravarti Rajagopalachari, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad. On the other hand, there was a leftist faction like Jawaharlal Nehru. Subhash Chandra Bose at that time, in London, but still Subhash was having the view. Then the members of Congress Socialist Party, so they came to realize that no, we have not to open the door of constitutionalism, although we have to fight the elections. We have to fight the elections in order to reflect the popular strength to the government, but we have not to form the government. Rather, we have to keep ourselves from the government, and later we have to organize a revolution against the British. So they believe that actually, if we are going to forming the government, so then the people will expect a lot from us. As we are in government, so we have to do some, we have to take some measures, pro-people's measures in favor of the people. But as our hands are tied, particularly due to the too much power in provinces given to the governor in Article 93, we will not take the proper measures and will not adopt the pro-people's program. So that is going to tarnish our image in the eyes of the common people. So that will be costly to us from the viewpoint of the popular perception. So we have not to form the government, although we have to fight the elections. Finally, it was decided whether we have to form the government or not, it is another thing. But better first, let us fight the elections. So at least on the issue of the fighting elections, both the rightist and leftist factions were having some identical view or having the consensus. So it was decided to fight the elections. अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको हिंदी में. लखनऊ में 1936 में कांग्रेस का सेशन हुआ, तो कांग्रेस ने इस काउंसिल बिल पर विचार किया और क्रिटिसाइज तो किया. जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसमें ब्रेक है, इंजन नदारत है. मतलब उनका कहना यह था कि ब्रिटिश ने टू मेनी चेक्स इसमें डाल दिया है, लेकिन ब्रिटिश ने तो हमें पावर ही नहीं दिया है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये तो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर बहुत सारे नियंत्रण बांध दिया और पावर नहीं दिया है, तो उनका कहना था. फिर भी कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया. अब देखो, कांग्रेस में राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दो फैक्शन में डिवाइडेड था. तो जो दक्षिणपंथी और वामपंथी गुट में वल्लभभाई पटेल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर प्रसाद त्यागी थे. इनका कहना था कि देखिए, जब से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया है, तब से कांग्रेस ने कोई मूवमेंट किया नहीं है. और इस तरह से कांग्रेस जिस तरह से इनएक्शन में है, जिस तरह से गतिहीन बैठी हुई है, उसमें क्या है कि लोगों का विश्वास अब कांग्रेस से हिल रहा है. तो लोगों के विश्वास को जगाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करना होगा. तो बेहतर यही है कि हम लोग इलेक्शन फाइट करें और फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करें और कुछ एक्टिविटीज लाएं इंडिया में. तो अब वामपंथी गुट में जो लेफ्टिस्ट थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे. सुभाष चंद्र बोस लंदन में थे, इंडिया में नहीं थे.
और गवर्नमेंट की पहुंच से भी बाहर थे, लेकिन विचार तो दे ही रहे थे, कॉरेस्पॉन्डेंस तो कर ही रहे थे वहां से। और इधर कांग्रेस समाजवादी दल के लीडर से तो इन लोगों का कहना था कि देखिए हम इलेक्शन फाइट करते हैं क्योंकि अपना पावर दिखाएंगे ब्रिटिश को कि भाई देखो हमारा कितना पॉपुलर सपोर्ट है, लेकिन हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो पीपल हमसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि हम उनके लिए कुछ कंप्लीट करें, और जितना पावर गवर्नर को दिया हुआ है हमें प्रोविंस में कुछ करने नहीं देगा, तो हम उसमें क्या होगा, एक्सपोज हो जाएंगे, पब्लिक को हम पर से भरोसा टूटेगा, हमारा इमेज वो खराब होगा, हमें ऐसा नहीं करना है। तो अंत में दोनों में मतभेद बना रहा, तो अंत में क्या हुआ कि चलिए अब गवर्नमेंट बनाएंगे ना बनाएंगे तो बात की बात करें, तो इलेक्शन लड़ा जाए, चलिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो इन 1937 द कांग्रेस फॉट इलेक्शंस, कांग्रेस फॉट इलेक्शंस। अब इसमें जो कांग्रेस की कैंपेनिंग हुई, दैट बिकेम इलस्ट्रियस। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द स्टार, you can say, representative and a star propagandist of the Congress. Jawaharlal Nehru started to make a trip and make tours to different parts of India. He was moving in, you can say, automobile, he was moving in train, he was moving in a bullock cart, he was moving even horse, tanga, chariot, ikka, and he just visited to different places of India. And he was a star propagandist, and among the Congress, even Gandhi came to believe that Jawaharlal was the most influential orator of the Congress. So Jawaharlal Nehru became too much active, and he became the star orator of the Congress, and he just organized this movement, and just organized, you can say, and he led the Congress at that time. So it was a great success for Jawaharlal, you can say, Congress under Jawaharlal Nehru. But there was the balance of power between the leftist and rightist faction. And Vallabhbhai Patel, he just, you can say, reserved his right to distribute the tickets of the Congress so that he could have the control of the candidates, who will be candidates and who not. So in this way, the balance was maintained. The landslide victory for the Congress. There were total 11 provinces. In 5 provinces, the Congress was having the total. In 5 provinces out of 11, the Congress was having the clear-cut majority. But Congress was in a position to form the government with support of some, you can say, smaller party in 2 more states and 1 more state. So Congress could have formed the government lastly in 8 provinces out of 11. And out of 11, you can say, Sindh, Bengal, and Punjab. These 3 states were beyond the control of the Congress. You can say Congress could not form the government there. But now, whenever there is the question of forming the government, then differences cropped up between the two. Leftists vetoed the proposal. No, Congress could not form the government. So rightists were quite in a fix, you can say. It was the time, the moment of crisis. So the rightist faction just needed the mediation from Gandhi. So if you people are smart enough to watch the Gandhi movie I have suggested you earlier, so there in Gandhi movie, a very interesting scene you might have found there. Vallabhbhai Patel was rushing to, along with some leaders, was rushing to Gandhi's ashram Wardha, and he was in quite in a fix. And on that fateful day, by chance, the leg of one of his goats has been fractured. So Gandhi just, you can say, just putting some balm on his leg, and he was busy there. And Vallabhbhai Patel could have just lodged his own complaint, but Gandhi just, you can say, started to inform Vallabhbhai Patel, Patel, you have come, I am happy. After all, you can say, my goat's leg has been fractured, so I am doing something. So Vallabhbhai Patel could have discussed about the national crisis, and Gandhi has started to make a complaint about the leg of his goat. So this was the case, you can say. मतलब मैं आपको बताता हूँ. Actually, जब अब तो कांग्रेस को बहुत बड़ी विजय मिली, बहुत बड़ी सफलता मिली। चुनाव में नेहरू के स्टार प्रचारक हुए, गाड़ियों में, बैलगाड़ी में, इक्का गाड़ी में, तांगे में, मोटर गाड़ी में, नाव पर बैठकर उन्होंने बहुत क्षेत्रों की यात्रा की और वहां पर उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया, बहुत बड़े प्रचारक बने। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने अपना राइट रिजर्व रखा, उन्होंने टिकट बांटने का काम अपने हाथ में रखा ताकि मतलब एकदम बैलेंस बना रहे, ऐसा ना हो कि सब नेहरू समझ सकी, सब कांग्रेस के कैंडिडेट्स बन जाए। और उसके बाद फिर कांग्रेस को बहुत लैंडस्लाइड, बहुत बड़ी विक्ट्री मिली, बहुत बड़ी सफलता मिली। तो 5 प्रोविंसेस में तो कांग्रेस का क्लियर कट मेजॉरिटी था। लेकिन कांग्रेस 2 प्रोविंस में और भी थोड़ा पार्टी से, जैसे बॉम्बे में थोड़ा अम्बेडकर की पार्टी का 2 मेंबर्स ले लेती, उसकी सरकार बन जाती, उस तरह से एक प्रोविंस था। और अंत में असम में उसकी गुंजाइश बैठ गई थी। तो 8 प्रोविंस में कांग्रेस बना सकती थी, 5 में उसका क्लियर कट ये था। केवल सिंध, पंजाब और बंगाल, इस 3 में कांग्रेस को सरकार नहीं बनती। अब बस वही हुआ, दक्षिणपंथी वामपंथी गुट में, वामपंथी गुट में कहा नहीं हम तो नहीं बनाएंगे। अब आ गई क्राइसिस, तो दक्षिणपंथी दौड़े गुट गांधी जी के आश्रम में। तो गांधी जी का वही मैंने कहा कि आपने अगर मूवी देखी होगी, गांधी मूवी आपने देखी, आपने बताया था, हमें याद है, तो रिचर्ड एटनबरो वाली, तो उसमें वल्लभ भाई पटेल कुछ नेताओं के साथ जाते हैं, गांधी जी से कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, देखिए आप हमको तो ऐसे ऐसे ये सरकार नहीं फॉर्म करने दे। तो गांधी जी अपना कंप्लेन लेके बैठ गए, उनकी एक बकरी की टांग टूट गई थी, तो उन्होंने उसका मिट्टी वगैरह में रखा था, कहा पटेल देखो क्या हो गया, मेरी बकरी की टांग टूट गई। और फिर वो आश्रम में कुछ जड़ी बूटी लाने गए और पटेल को वहीं पर उनका एक चारपाई थी, उसको बैठा दिया और हाथ में घास पकड़ा देकर बकरी को खिलाओ। अब वल्लभ भाई पटेल बहुत चकित है, तुरंत ग्रासेस को देख रहे हैं, तो बकरी को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि इतना नेशनल क्राइसिस है, गांधी जी क्या कर रहे हैं। Anyway, तो गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। Actually, गांधी जी just inquired from the leftists, tried to persuade the leftist faction, because after all, Gandhi was making a tilt towards the rightist faction. कि today it is believed that Gandhi tilted in favor of Nehru against Vallabhbhai Patel. But truth is that Vallabhbhai Patel was the blind follower of Gandhi, and Nehru was having ideological difference with Gandhi. But Gandhi was having such an unflinching faith in the you can say capability of Nehru. That's why he chose Nehru as the prime minister candidate. It does not mean that Patel was not dear to him. He was equally dear to him. But there was a question of capability as the prime minister of India. So who will become the prime minister of India? तो नेहरू में उनको बहुत ज्यादा गांधी जी को विश्वास है। गांधी ने एक बार कहा था, गवर्नर जनरल था लिलित हुआ वेवेल को, कि जवाहरलाल से कभी बहस मत करना, डिबेट मत करना, रात भर आप बोलते रह जाइएगा और वो रात भर आपको काउंटर करता रह जाएगा, लेकिन अपनी बात मनवा के ही छोड़ेगा। तो इतना विश्वास था जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। तो एनीवे माय पॉइंट इज, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सजेस्ट किया कि अच्छा एक बात बताइए, अगर उसमें ललित था वायसराय, उन्होंने कहा कि अगर वायसराय ललित को लिखित दे देता है कि गवर्नर इस मामले में अनड्यू हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब गवर्नमेंट बनाने में क्या कठिनाई है। तो यू हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। एक्चुअली गांधी ब्रॉट अ कॉम्प्रोमाइज फार्मूला। ही गिव अ प्रपोजल टू द लेफ्टिस्ट फैक्शन, इफ वायसराय ललित विल गिव अस द प्रॉमिस इन रिटर्न कि द गवर्नर्स वुड नॉट मेक एनी अनड्यू इंटरवेंशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फॉर्मिंग द थिंग। Means there is some technical mistake and service problem, because online there is a very we are having some constraint here, but I need your cooperation in this situation. Suppose you can say I'm not giving any message, and in the meantime the class is getting interrupted, so you people have to take it granted. It means there is some technical mistake and sir will reappear again, so you will wait, you will just waiting for me, you will not leave the site. Just come to the point. I'm not sure. So you know finally
Gandhi brought a compromise formula, and then it became clear that now the Congress had to form the government. So Congress initially formed the government in 7 states, then in 8 states. Unfortunately, Muslim League could not form in the elections. The Muslim League performed very poorly, and it could not even in central legislature there were the regional Muslim seats, But even on the regional Muslim seats, the Muslim League could not get success, and in no province Muslim League could form the government at its own. Actually, in Punjab there was the formation of the government of Unionist Party, and there the leader of Unionist Party was a Muslim leader Sikandar Hayat Khan, but he formed a coalition government along with a Jat leader Chotu Ram and Akali leader Master Tara Singh. So there was the coalition government when the Congress used to give the support from outside. In case of Bengal, it was another Muslim faction, that was Krisak Praja Party of Fazlul Haq. He was leading a party of cultivators or agriculturists, you can say, the peasants, and he was leading mainly the Muslim peasants and Hindu peasants both. It was a peasants party against the Jamindars. So this Krisak Praja Party formed the government in Bengal, and the Muslim League was giving support from outside. Muslim League was not a part of the government there. So Muslim League could not form the government anywhere. Muslim League was, in one sense, it performed very poorly in the elections. मतलब यहाँ पर मैंने आपको यह बताया कि 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा. सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो रीजनल मुस्लिम सीट्स दिया गया था, उसमें मुस्लिम लीग वहां भी अच्छा नहीं कर सकी, और उसके अलावा जो प्रोविंस में कहे तो मुस्लिम लीग को कहीं भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ. मुस्लिम लीग बिल्कुल उसमें पंजाब में एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो सिकंदर हयात खान मुस्लिम लीडर था, उसकी पार्टी थी, लेकिन उसके साथ छोटू राम जाट भी थे, यानी हिंदू के साथ मिलकर उसने बनाया था, और अकाली नेता मास्टर तारा सिंह भी थे. इसलिए जब सिकंदर हयात खान था, वो जिन्ना की तरह वो कम्युनिस्ट पॉलिसी को नहीं लेकर चल सकता था, क्योंकि वो हिंदू और सिख के सहयोग पर टिका हुआ था. यहाँ बंगाल में क्या था कि जो मुजफ्फर, वहां पर बंगाल में एक कृषक प्रजा पार्टी थी, जो किसानों की पार्टी थी, उसका नेता था फजलुल हक. तो फजलुल हक ने बंगाल में गवर्नमेंट बनाई, और उसमें मुस्लिम लीग का सपोर्ट था उस गवर्नमेंट को, कृषक प्रजा पार्टी को आउटसाइड सपोर्ट था, परंतु मुस्लिम लीग उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था, तो मुस्लिम लीग कहीं सरकार नहीं बना पाई. ये स्थिति है. अब कांग्रेस मिनिस्ट्री का यू विल फाइंड हियर द अबाउट द कांग्रेस की 28 months of Congress government. 28 months of the Congress government. Congress governments. मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने 28 months तक शासन किया, 28 महीनों तक, एंड यू फाइंड इट वाज हैविंग सम अचीवमेंट्स. अब इसका अचीवमेंट्स क्या था उसको देखिए. टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मींस कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स मींस कि in course of civil disorder's movement, actually the revolutionaries in course of civil disorder's movement, actually the agitators and the volunteers, they were arrested, so they were still languishing in jail. They had been languishing in jail. So when there was the formation of the Congress ministry in provinces, actually now you can say in all the subjects in provinces were under the control of the elected ministers. Although the governor was having the veto power, but the elected ministry was having the you can say control over all the subjects. So you just come to realize here it was the case, so that's why even the jail and prison, or you can say jail as well as the law and order, all were under the control of the elected government. So here you can say the government started to release the political prisoners. So that is the one point of achievement. Then you are coming to the second one point. What is the second one point? So second one point of was, you can say, freedom of press. It emphasized the freedom of press. So freedom of press, you can say in this way, because it was the avowed goal of Congress, so freedom of press. Then you will come to the third one point. What is the third one point? So that is tenancy laws. टेनेंसी लॉज कहते हैं हिंदी में रेतवाड़ी कानून का मतलब किसानों की सुरक्षा के लिए लॉज बनाना. जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल टेनेंसी एक्ट, यू फाइंड देन यू फाइंड बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1859-1885. So likewise there you find the tenancy act. So they enacted the tenancy act in different provinces. Our tenancy act, UP Agra tenancy act. So these were the name of the acts, you can say, in order to give protection to peasants. मतलब उन्होंने रेतवाड़ी कानून पारित किया, उसके माध्यम से किसानों को सुरक्षा दी, प्रेस की आजादी की बात की, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की, और एक आपने देखा होगा एक वर्धा एजुकेशन प्लान. एजुकेशन के फ्रंट पर कुछ किया. एक्चुअली there was the formation of a Zakir Hussain Committee on Education, and this committee assimilated the ideas of Gandhi on the front of education. There should be the you can say study and work, both should be combined together in Vardha education system. So they just tried to introduce the Vardha education system based on the ideas of Gandhi, but unfortunately due to you can say resignation of the government after 28 months, this plan could not be enacted. तो उन्होंने एक वर्धा शिक्षा योजना लाई थी जो गांधी जी के विचारों पर, जाकिर हुसैन कमेटी की अनुशंसा पर थी और गांधी जी के विचारों पर थी, परंतु 28 महीनों के बाद सरकार गिर गई तो ये योजना लागू नहीं हो पाई. तो चलिए ये सब कुछ अचीवमेंट था. अब नाउ क्वेश्चन arises कि what happened? Actually earlier the government was apprehensive about the behavior of the governors. The governors had to make undue intervention in the government and undue interference in the government. So what is the actual situation and actual reaction of governors? So from the side of governor or bureaucracy, the government did not have any major problem. मतलब all was okay. Governors didn't make any undue interference. What problem? अच्छा. Yes. So governors didn't make any undue interference. At one and two occasions, governors tried to veto the issue of the release of prisoners, and at that time some Congress ministry like Sri Krishna Singh was the prime minister. At that time, there was not the name chief minister. The head of the state government was called prime minister. So Sri Krishna Singh in Bihar and Govind Vallabh Pant, government of Govind Vallabh Pant in UP, United Province. So they resigned as a reaction to the interference to the governor. So issue was brought suddenly to the attention of Viceroy, and Viceroy took the action, and Viceroy just mediated between the two, and finally you can say governor had to veto the veto, and the governments veto their resignation. मतलब देखो गवर्नर की तरफ से कोई समस्या नहीं आई ज्यादा. जब इन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई जब एकदम मैसिवली बड़े पैमाने पर करने लगे और गांव में उत्साह होने लगा, गांव में तो काफी उत्साह था. पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, मतलब गांव में किसानों के बारे में कहा जाता है कि उतने उत्साह में थे कि सचिवालय तो काफी उत्साह था. पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, मतलब गांव में किसानों के बारे में कहा जाता है कि उतने उत्साह में थे कि सचिवालय आते थे और आके वो मिनिस्ट्री में घूमते थे, चेयर को टच करके देखते थे कि हाँ ये हमारा गवर्नमेंट है. उनके लिए मैटर ऑफ ग्लोरी फॉर देम कि वी हैव फाउंड आवर गवर्नमेंट. कुछ तो इतनी इंथुजियास्टिक थे कि उनको लगा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ अपना है. उनका कहना था कि अब सब कुछ अपना है, गवर्नमेंट अपना है, सब कुछ अपना है. इट वाज इंथुसियाज्म ऑफ द कॉमन पीपल अबाउट द गवर्नमेंट, यू कैन से. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड मुस्लिम लीग
brought a lot of created a lot of difficulties, and Muslim League brought undue charge against the Congress governments. The Congress had consciously promoted the Devanagari script and discouraged the Persian script, and the Congress has consciously banned cow slaughter, which was running against the Muslims' interest. So there was you can say Pirpur report. There was a Pirpur report was prepared by the Muslim League, some Muslim leader. Then the Sharif report in Bihar. So this report was charging the Congress against the discrimination against the Muslims. Then you can say Muhammad Ali was a Muslim leader of Muslim League, so he wrote a book. The name was the Muslim Sufferings Under the Congress Rule. तो मतलब मुस्लिम लीग ने बड़ी परेशानी पैदा की. उसने कांग्रेस की सरकार पर बहुत चार्जेस लगाए, क्योंकि तो ऐसे खाली बैठी थी. आप तो जानते हो खाली मन शैतान का घर. तो उसके दिमाग में बहुत सारे खुरापात चलते थे. उस तरह के चार्जेस कांग्रेस पर लाती थी. इन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट को बढ़ाया, फारसी लिपि को स्क्रिप्ट को डिस्करेज किया, गोरक्षा की बात करके और गोहत्या पर पाबंदी लगाई, तो मुस्लिमों के हितों को खतरा पहुंचा. बहुत तरह की बातें की. कई रिपोर्ट तैयार की है, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मोहम्मद अली का मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल. तो यही हुआ. Anyway, anyhow, for 28 months, these governments could work very efficiently, undoubtedly. But my friends, now the situation came. And the worst situation came, I'm changing the paragraph so that it will be visible to you. Now, just after the diagram I am making you clear, now a situation changed, and there was outbreak of the Second World War. Outbreak of the Second World War. That is not, Second World War in 1939. This war started actually on 1st September 1939. On 1st September 1939, German army just invaded Poland. So in reply, as a counter-attack, Britain and France declared war against Germany on 3rd September. So properly the Second World War started. Once the Second World War started, the British, without consulting any important Indian party, without consulting Congress or any nationalist party, and then the British government, the government of this one, it declared India to be a belligerent nation in the Second World War on behalf of the Allied powers, means Britain and France, on the behalf of Britain. So it was the time Congress was utterly shocked. And Gandhi once again became active, because since the last 1934 to 1939, I have told you, Gandhi was busy in village reconstruction program, but Gandhi now became too much active. And Gandhi gave his famous slogan, "Na ek pai, na ek bhai. Na ek pai, na ek bhai. This time I will not give you a single penny, and not a single soldier from India, because during the First World War you have cheated us. I have given you the extended support, but what have you done? You have given us in reward Rowlatt Act. This time we are not going to extend any support to you people. Keep your mind. We will give you the conditional support. You have to fulfill 2 requirements." So Congress reaction, you can say. Then Indians will make their own constitution. You will fulfill the 2 conditions and place the defense of India under the responsible government. You will be accountable for the defense of India, and we are not going to leave the question of the defense of India into your hand solely, and only then we can mobilize the support for you. The government did not make any response to Congress demand. So then Congress Ala Kaman just advised the Congress ministry in provinces to resign from the post. So up to the October last, all the Congress ministry resigned. You can see. All the Congress ministry resigned. But my friends, here I have to give you the information. In 2015, Shashi Tharoor has written a text, you can say, that is, the name of the text is on history, An Era of Darkness. An Era of Darkness under the British rule. Outside of India, the book has been published in the name of Inglorious Empire, but Shashi Tharoor has written a text, you can say, that is, the name of the text is on history, An Era of Darkness. An Era of Darkness under the British rule. Outside of India, the book has been published in the name of Inglorious Empire, but Shashi Tharoor has, actually, he had there a discussion on that is on a platform that is called the Oxford discussion, and there he brought a lot of charge against the British, and later he published the book An Era of Darkness. So in this book, for the first time, Shashi Tharoor has mentioned that actually Congress here done a tactical mistake for resigning from the ministries and provinces. The Congress actually created a political vacuum after resigning, and this vacuum was filled up by Muslim League. So Congress would have fought against the government, but the Congress would not have resigned from the post. So Shashi Tharoor ने एक नई बात कही कि भाई कांग्रेस को रिजाइन नहीं करना चाहिए. Anyway, पॉइंट ये है कि 3 सितंबर को सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व शुरू हो गया. पहले तो पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया, फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर हमला किया, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध. और फिर ब्रिटिश ने भारत से बिना पूछे हुए किसी पार्टी से कंसल्ट किए हुए इसको युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, ए बेलिजेंट नेशन. इस पर अब गांधी जी एक्टिव हो गए. तो 34 से थे, विशेष रूप से हरिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम में आप देखा कि फिर भी कांग्रेस सेशन में तो आते ही थे फिर भी, लेकिन अब वो पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पर आ गए और नारा दिया, ना एक पाई ना एक भाई. हम इस बार आपको पहले की तरह नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने बिना शर्त समर्थन दिया, आपने रॉलेट दिया. पहले आप शर्त तय करिए, तभी हम इस वॉर में आपके साथ आएंगे, और 2 कंडीशन को फुलफिल करिए. एक तो सेंटर में आप एक उत्तरदायी सरकार, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट बनाइए, और भारत का डिफेंस जो रक्षा है उस गवर्नमेंट के हाथ में दीजिए, और युद्ध के बाद आप वादा करिए कि आप संविधान सभा पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा निर्मित बनाएंगे. सरकार ने इस पर कोई रिस्पांस नहीं किया. तो अक्टूबर, यू कैन से इन अक्टूबर लास्ट तक, अक्टूबर एंड, ऑल कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड, और कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड. अब इसके बाद 1939 में हम लोग पहुंच गए. अब इसके बाद आगे देखेंगे आपका नेशनलिज्म ओवर हुआ, लेकिन कम्युनिज्म अभी बचा हुआ है, क्योंकि 2 करंट आप देखते हो, वन करंट नेशनलिज्म, अनदर करंट कम्युनिज्म. सो नाउ इन द लास्ट वी हैव टू ऑब्जर्व कम्युनिज्म. अब ये हम लोगों ने कवर कर लिया, कांग्रेस, वन करंट नेशनलिज्म, अनदर करंट कम्युनिज्म. 1939 में हम लोग पहुंच गए. अब इसके बाद आगे देखेंगे आपका नेशनलिज्म, अक्टूबर एंड, ऑल कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड, और कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड. अब इसके बाद 1939 में हम लोग पहुंच गए. अब इसके बाद आगे देखेंगे आपका नेशनलिज्म ओवर हुआ, लेकिन कम्युनिज्म अभी बचा हुआ है, क्योंकि 2 करंट आप देखते हो, वन करंट नेशनलिज्म, अनदर करंट कम्युनिज्म. सो नाउ इन द लास्ट वी हैव टू ऑब्जर्व कम्युनिज्म. अब ये हम लोगों ने कवर कर लिया, कांग्रेस मिनिस्ट्री एंड इट्स अचीवमेंट्स. ये सब कुछ आपका हमने दिया हुआ है. लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंसेस एकदम क्लियर है, आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा. क्लास में सुनने के बाद फिर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको. यू जस्ट रिकॉल देम. रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट्स. अब नाउ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट. अच्छा, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं. अब लास्ट में आते हैं, अवेयरनेस अमंग वुमेन, राइज ऑफ कम्युनिज्म. यहाँ पर देखो, अब देखो राइज ऑफ कम्युनिज्म में हमने 2 ही बातें आपको बताई है. आपको मैंने जो डायग्राम दिया है उसमें 2 ही बातें.
राइज ऑफ कम्युनलिज्म। अब राइज ऑफ कम्युनलिज्म में एक है प्रोग्रेस ऑफ सोशलिज्म एंड लेफ्टिज्म क्रिएटेड कंसर्न फॉर मुस्लिम जमींदार्स, Muslim landlords. Now, students, actually, Muslim League was basically a party of jamindars. You can say, in Muslim community at that time, there was not the proper emergence of the middle class due to the lack of the sufficient aspect of education. So it was the Hindu jamindars who got the education. So they were two in one. They were basically jamindars. They were educated as well from Sir Syed Ahmad Khan to Mohsin Mulk and even Jinnah. So basically, Jinnah was not properly jamindars, but different were the jamindars, you can say. So basically, they were the landholders. So actually, when there was the progress of socialism and communism, so landholders elements in Muslim League, so they were slightly terrified. They came to believe that if the society will be divided on economic lines, so the rich Hindus and rich Muslims one side and poor Hindus and poor Muslims other side, so that will create actually we will become the most minority because the handful of the rich people will be threatened due to the aggressive policy of the poor people. So better to create cleavage in society on religious line. The society should not be allowed to be divided on economic lines, so better to divide them on communal line, so that the Hindus in one side and Muslims in other side. So the attention of the, you can say, attention of the whole movement would be diverted from the course of socialism and leftism and move to communism. उनकी साजिश ये थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर कहीं आर्थिक मुद्दे पर विभाजन हो गया तो जो धनी मुसलमान धनी हिंदू एक तरफ होंगे और जो पुअर मुसलमान और जो पुअर हिंदू हैं वो दूसरी तरफ होंगे। तो ऐसा करते हैं, उनको हम कॉमनल लाइन पर डिवाइड कर देते हैं, सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर देते हैं, ताकि आर्थिक आधार पर विभाजन रुक जाए। तो एक वजह है। सेकंड वन, फेलियर ऑफ communal parties in elections of 1930s. So in the elections of 1937. Failure of communal parties in elections of 1930s. So in the elections of 1937. Here you will come to know that Muslim League received a major setback in the elections. So when the Muslim League received a major setback in elections, so now Muslim League started to make a self-introspection. What is the reason behind our failure in the elections? The Muslim League came to realize that it was lacking a clear-cut program. It was having a dearth of a clear-cut program on which they could have mobilized the Muslims. Because Muslim League was having the bitter realization that it was still a party of the Muslim elites, not the Muslim masses. It better preferred to bring such a program on which the Muslim League could have gathered the common masses. So it changed its strategy just after the elections of 1937. So Jinnah first of all decided to bring a very radical communal program on which he could have attracted the common Muslim masses. So my students, let I inform you in the next one phase. In 1914 Lahore proposal, Jinnah introduced the proposal of separate Muslim state or states. Separate Muslim states. So at that time the name Pakistan was avoided. There was not the use of the name Pakistan. I will discuss with you later. But they have used the term separate state, and then the Muslim League just provoked the Muslim leaders of the league better to make a contact with the Qazi and ulama and orthodox Muslim elements, and they started to give the slogan later, "Lar kar lenge Pakistan." We have to take Pakistan through fighting. So that's why you can say that Jinnah just changed his strategy. He even formed the provincial committees. Even the membership fee of Muslim League was reduced so that Muslim League could have been converted into the party of the masses. मतलब मैं जिन्ना के बारे में आपको बताना चाहता कि जब 1937 के चुनाव में जब इनको झटका लगा तो जिन्ना ने रियलाइज करना शुरू किया कि आखिर प्रॉब्लम कहां आ गई, क्यों हम इसमें फेल कर गए। तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि देखो मुस्लिम लीग अभी भी कुलीनों की पार्टी है, एलिट क्लास की पार्टी है, कॉमन पीपल को हम नहीं जोड़ पाए। उसने सोचा कि भाई अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें हम कॉमन पीपल को जोड़ सके। तो जिन्ना ने 1940 के लाहौर प्रपोजल में पहली बार पृथक मुस्लिम प्रांत सेपरेट मुस्लिम स्टेट का प्रपोजल आया। और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग के नेताओं को उकसाया, हालांकि जिन्ना तो अपने व्यक्तिगत कन्विक्शन में सेकुलर ही टेम्परामेंट के थे, लेकिन नेताओं को उन्होंने मतलब प्रोवोक किया कि आप लोग जाइए और जाकर उलेमाओं से कांटेक्ट करिए और उलेमा वगैरह से कांटेक्ट करके और तो कोशिश करिए जितने कॉमन मासेस को आप जोड़ सकें इस चुनाव मतलब इस हमारी पार्टी से। और तब उन्होंने लड़ कर लेंगे पाकिस्तान का नारा भी आगे देना शुरू किया। इन्होंने रणनीति चेंज कर दी। ये तो हुआ मुस्लिम लीग की, लेकिन उधर दूसरी तरफ हिंदू वाली पार्टी भी थी। तो second one you can say as what happened in case of Muslim League, almost same happened in case of Hindu Mahasabha. Even the worst performance of Hindu Mahasabha. Madan Mohan Malviya was at that time the president of Hindu Mahasabha. So this party performed in the election so poorly, even more poorly than the League, because after all the League you can say it was a party, single party, it was not having any major contestant among the Muslims, but among the common Indians and particularly the Hindus were more attracted towards the Congress. So Hindu Mahasabha almost you can say it was not enjoying the proper mandate of the people. So finally it performed very poorly. So after that in 1938 you can say it was B.D. Savarkar. I have told you the whole story of B.D. Savarkar. B.D. Savarkar was earlier the revolutionary, then he was arrested, he was in Andaman jail, then he sought the mercy, he just gave the mercy petition to the government, later he was transferred here there to India, he remained in jail of the Naratnagiri sometime, even you can say then in Bombay, in the jail there, and then finally you can say he was released in 1924 to 1937, he was under the, you can say, house, in some sort of house arrest in Naratnagiri itself, and then finally you can say he was released in 1937 finally by Nilethos government after some promise and written promise he gave he will not do any sort of take the action against the government in future. So finally he was released, and in 1938 he became the president of Hindu Mahasabha. So B.D. Savarkar was hardliner you can say. And what was the specific ideology
of V.D. Savarkar I will discuss with you later. So V.D. Savarkar activated Hindu Mahasabha further. In the meantime, Dr. Hegdewar was the head of the RSS. He was the founder of RSS. I have told you Balram Hegdewar, but Balram Hegdewar, he possibly died in 1935 or 36. So after his death, there was the new Sang Sanchalak of RSS was MS Golwalkar. So MS Golwalkar was the hardliner then, Balram Hegdewar. So now a new era started according to Bipin Chandra Jinnah. In second phase became more radical communalist. Then V.D. Savarkar is more aggressive than Madan Mohan Malviya, and MS Golwalkar was more aggressive than Balram Hegdewar. So now a new phase, communism entered into a new phase. So in one sense, my students, later I will give you a question. The elections of 1937 proved a landmark proved the landmark or the elections of 1937 just encourage the you can say encourage the communal politics in India. Comment. So how did this elections of 1937 encourage the communal politics in India? But my work is over today. But I have to pose some question to you people. कि कुछ एक कल के लिए मैं कुछ डालना चाहता हूँ. एक क्वेश्चन आपको लिखेंगे. हाँ, हिंदी में मैंने नहीं कहा, हो सकता है मेरे स्टूडेंट को दिक्कत होगी. मैंने आपको बताया कि जैसे मुस्लिम लीग की रणनीति रही, तो उधर हिंदू महासभा का तो और बुरा परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस मेन पार्टी हिंदुओं में थी, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा हुआ. मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, तो उनको अब इलेक्शन से इतना असंतुष्ट हुए कि स्वास्थ्य के आधार पर उन्होंने रिजाइन किया अध्यक्ष पद से, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया हिंदू महासभा. तो मैंने V.D. सावरकर के बारे में बताया कि कैसे वो पहले अंडमान निकोबार जेल में थे, फिर मर्सी पिटीशन दिया, फिर उनको रत्नागिरी ट्रांसफर किया गया, फिर कुछ समय तक नजर बंद रहे 37 तक, फिर 37 उनको लिखित दिया, तो उनको रिलीज किया गया, और फिर 1938 में हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष बन गए. वो थे बड़े हार्डलाइनर, वो मतलब मदन मोहन मालवीय तो सॉफ्ट लाइनर थे, बड़े हार्डलाइनर थे. और फिर इधर आरएसएस के पहले अध्यक्ष थे वो थे बलिराम हेगडेवार, अब बन गए V.D. सावरकर. तो V.D. सावरकर थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव थे, और सॉरी ये MS गोलवलकर थोड़ा एग्रेसिव थे हेगडेवार की तुलना में ज्यादा. अब जिन्ना सेकंड फेज में जब आए तो बहुत बड़े रेडिकल, सावरकर जी थे वो भी रेडिकल, मतलब रेडिकल थोड़ा सा थे, गोलवलकर भी रेडिकल थे. इससे कम्युनिज्म के फ्रंट पर प्रोग्रेस हो जाएगा आगे चलकर. और आप 1939 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए क्या दृश्य है. सावरकर जी, गोलवलकर जी, जिन्ना, ये सब आपस में कैसे और ज्यादा कम्युनिज्म थ्राइव करता रहा, और ये इंडिया के लिए तो भाग्य रहा. तो हमने स्वतंत्रता भी पाई और विभाजन भी पाई. अब मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन तुम लोगों को डाल देता कल के लिए होमवर्क के लिए, कौन सा क्वेश्चन डालूं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो है पीछे का, लेकिन वो आपके लिए बड़ा हेवी हो जाएगा, मैं ही कर दूंगा. देखो कल या परसों तक जब भी होता है. टुडे आई हैव टू गिव यू क्वेश्चन. यही मैं देता हूं. इलेक्शंस ऑफ 1937 gave a boost to communal politics in India. एग्जामिन. मतलब 1937 के चुनावों ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बूस्ट किया, उन्हें बढ़ावा दिया. इस कथन का परीक्षण कीजिए. दैट इज द क्वेश्चन. You people will try, Mr. Ankur, ask my students now. He will answer my question. Be fast, my student, at least, because Ankur is the bridge between us. Or you can say new Sanjay, I just told you. So you people have to be fast. Will you answer my question? Will you try the question? So my students, now session is over today. I will see you tomorrow from after 1939 onwards. I have already sent you the study material. So you will just go through 1939 to 45, not all the complete. 45 to 47, I'll just take this class the day after tomorrow. 150 words. 150 words. 150 words. Explain the role of princely Indian movement. I'll discuss at that time. Ashish, I'll discuss this aspect, the role of princely estates next time. Actually, either whenever I'll just teach you the integration of princely estates, there I'll discuss. Ashish, I have just taken in my mind. So please have patience. In post-independence era, I have to deal with a topic, the integration of princely estates. There I'll discuss the role of princely estates in the national movement of India. Okay. Thank you very much, my friends. Thank you very much. I'll see you tomorrow.